Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening. Hello everyone, I'm Dr. Jyotsna. Hello, ma'am. All right, so do we communicate orally or via text? What is more comfortable? Oral. I'm oral coming. Oral, perfect. You guys can see the whiteboard? Yes, ma'am. Perfecto. Hello everyone, I'm Dr. Jyotsna. I'll be taking 2-3 sessions of biology for you. And Sir has told me that this time we have to take plant control and coordination. So are we all ready for it? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. All right. So just quick few questions. We are through with neural control and coordination in animals. Yes. Yes, ma'am. Cool. So you know कि animals के पास nervous tissue होता है, animals के पास brain है, spinal cord है, nerves है, जिससे वो सारा conduction करते हैं, right? Do you think ऐसा कुछ plants के पास भी होता है? They No. might have, but I'm not confirmed for the like neurons and brain. They work from hormones. They work with the help of hormones. So let me tell you one. Hormone. Yes. कि अगर plants को for that matter कि leaves ने खाना बना लिया है और अब leaves को वो खाना young shoot को देना है या stem को देना है जिसको अभी grow करना है तो वो आपस में communicate कैसे करते हैं? उनके पास तो nerves नहीं है, उनके पास तो neurons भी नहीं है, तो ये communication leaves से वो young shoot तक कैसे जाता है या फिर young shoot उस leaf से खाना कैसे मांगते हैं कि भाई मुझे grow करना है please मेरे को खाना दे दे. There has to be some mode of communication between the two parts. कि खाना वहां तक जाए ऑटोमेटिकली तो कुछ भी नहीं चलता है ऑटो मोड पे तो आज की डेट में कोई भी चीज काम नहीं करती सो हाउ इज दिस कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज वाया योर hormones as one of the master said. Can you tell me what is a hormone? Then we'll write it. Ma'am, they are the chemical messengers. They are the chemical messengers. Okay, let me be थोड़ा सा और उसके अंदर chemical messenger जो एक ही सेल को मैसेज करते हैं दो सेल के बीच के. Ma'am, between two cells, tissues, or one. So whenever we say that anything is a messenger, we must say that they are intercellular messengers. दो सेल के बीच में वो बातचीत करने में हेल्प करते हैं. अच्छा, do these chemicals provide nutrition? इनके breakdown से एनर्जी भी मिलती है? No, ma'am. Anybody No. say yes? सब कोई बात मान रहे हैं कि नहीं एनर्जी नहीं मिलती. Anybody? Spelled out in the form of nitrogenous waste. Okay. They have no nutritional value. See, एक सिंपल सा डेफिनेशन है जिससे हम हार्मोन को बहुत इजीली समझ सकते हैं कि what exactly are hormones? They are chemicals. Second, they are chemicals that act as messengers. Third, which are non-nutrient. By non-nutrient that means वो कोई एनर्जी हमको नहीं देते. हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ मैसेज लेने ले जाने का काम करते हैं. ठीक है, they are just carrying one information from a part to another part with no energy consumption or with no energy production. Either ways, ना बनती है ना टूटती है ना किसी काम आती है. वो सिर्फ और सिर्फ मैसेज ट्रांसपोर्ट करता है केमिकल. उसका एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है. तोड़ फोड़ करके न्यूट्रिएंट की तरह एक्ट करने का कोई लेना देना नहीं है. So 3 words whenever you define a hormone, be it an animal hormone or a plant hormone, how do we say? Okay. We take. I was just scribbling. Just a second.
So whenever we define hormones, it's going to vanish off. So can you help me? How do we write on this whiteboard? I'm more of using a PowerPoint person. He's not there. Ma'am, I've also never used whiteboard. What I'm doing is I'm using OneNote and then I'm doing screen sharing and then sharing that OneNote thing. All right. Perfect. Then I'll do that too. One second. All right. Perfect. I hope we are able to see the whiteboard, Peter, completely. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Bingo. So let's start with writing the first thing. Plant control and coordination is what we have to start off. I hope everyone's comfortable with English as a mode of communication. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Perfect. So we say the plants do not have any neuron, they do not have any neural system or a nervous system. Whatever communication is done for transport of substances or for growth of substances is done with the help of certain chemicals, which is known as the control and coordination part is done by hormones. And what exactly are hormones? 3 words to define a hormone. They are chemical messengers Intercellular. and very important, intercellular chemical messengers. So if a question comes that hormones are intracellular chemical messengers, hormones are intercellular chemical messengers, both of these, none of these, what will you mark? Both of them. Wrong answer. Only and only I'm intercellular. intercellular messengers. ठीक है, they are not intracellular, they are intercellular. हमेशा हार्मोन वो केमिकल है जो एक जना बनाता है और दूसरे तक पहुंचाता है. It goes to a distant place and acts. It does not act in the same cell which is produced or which is producing it. ठीक है बेटा? So intercellular, not intra. Both of these भी दिया होगा तो both of these answer नहीं होगा. अभी clear है? It will go from one cell to another cell, give message to a different location than from where it is being secreted. Good on it? Next. They are chemical messengers, they are intercellular chemical messengers, they are non-nutrient. वो हमें कोई एनर्जी में ना लेने में ना बनाने में ना देने में, no energy production. And lastly, with respect to कि कितने अमाउंट में बनते हैं, ज्यादा बनते हैं या कम बनते हैं, बनाते रहो. I'm less. Ma'am, they are in a limit. They are in a limit. Ma'am, no concentration. Limited amount में वो इतनी प्लांट की ग्रोथ कर देंगे. Yes. Yes. And they only Ma'am, because target they the just, ma'am, they just send the message. They does not Exactly. They are not have the used up. plant growth. You know, they are not used up. ऐसा नहीं है कि वो खपत हो जाएंगे. हाँ, या हम कह देंगे कि वो खत्म हो जाएंगे. So even the trace amount is going to produce the message, is going to produce the effect which is required. So these are chemicals which are intercellular, non-nutrient, released in small amounts or trace amounts, जो कि किस तरीके के functions को करने में help करती है plant की body में, खाना ले जाने आने में, growth करने में, तो हम उसको कह सकते हैं they are responsible for growth and development of the plant body. कम करनी है ना, या ज्यादा करनी है? Can you tell me growth is reversible or irreversible? Irreversible. 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 Why? We know it's irreversible. Perfect. Why?
Ma'am, maybe there is no hormone for sending message that reduce the growth. Okay, how does growth happen? Okay, let's talk about hair. Very common thing. It grows. Can it grow back? No. No. Why? Because it has increased in length. By which process? Mom, growth is basically when something is being created, so you can't basically destroy what's created. That's why you can't In reverse fact, growth. matter can neither be created nor be destroyed. है ना? ऐसा नहीं है कि create कर सकते हो but destroy नहीं कर सकते हो. वो definition तो अलग ही है कि matter can neither be created nor be destroyed. Biology में बेटा growth cell division से होती है. ठीक है, एक बार cell ने divide कर दिया और उसने नया cell बना दिया, आप उसको reverse नहीं कर सकते because cell division cannot be reversed. You grow in height, आप वापस छोटे नहीं हो सकते height में because your growth is because of cell division. True growth is internal, which is by cell division, which cannot be reversed. तो ऐसा नहीं है कि अगर हार्मोन दे देंगे रिवर्सल का तो रिवर्स हो जाएगी, नहीं. ना वैसा हार्मोन है और ना वैसा रिवर्सल हो सकता है. ग्रोथ इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस बिकॉज ऑफ सेल डिविजन. तो हम बोलते हैं कि हमारे पास ये जो हार्मोन्स है, these are those chemicals which are intercellular chemical messengers, non-nutrient, that regulate, and by regulate I mean growth and development, where growth is an irreversible process because it is by the virtue of cell division. You can't reverse cell division. Is this thing clear? अब जो plant hormone है, जो कि chemical messenger है, non-nutrient है, growth regulator है, उसको हम plant growth regulator बोलते हैं. When I call it a plant hormone, specifically plant plus hormone becomes a phytohormone. और क्या बोल सकते हैं? ऐसा केमिकल जो प्लांट की ग्रोथ और रेगुलेशन को कंट्रोल करता है. तो आई कैन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. Plant growth regulator. I can abbreviate it as well. Abbreviation means short form. PGR. अगर हम PGR बोलें तो इसका मतलब क्या है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम plant hormone के बारे में बात कर रहे हैं. PGR is a plant growth regulator, a chemical that regulates growth and development. And which chemical regulates plant growth and development? The plant hormones, the phytohormones. ये बात समझ में आती है? Everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubts, anybody? Anybody wants to ask a question? Shall we move forward? Ma'am, Yeah. do not require any energy. Ma'am, I'm asking that do they like require energy to like transport messages, hormones? Yes, you may say that. कि हमारी प्लांट की बॉडी में जो भी सामान कंडक्ट होता है वो कंडक्टिंग टिश्यूज करते हैं, जाइलम और फ्लोएम. ठीक है, जाइलम ज्यादातर वाटर कंडक्शन करता है, वाटर के साथ मिनरल्स और कुछ हार्मोन्स भी. हाँ, so xylem transports water, minerals and hormones. If the conduction is done via xylem, it does not require energy. क्योंकि xylem एक dead tissue है, वो energy concept में वर्क नहीं करता. ठीक है, but अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में हार्मोन फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इट हैपेंस, और फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट में लिविंग टिश्यू यूज होता है, तो लिविंग टिश्यू जब भी यूज होता है तो एनर्जी यूज हो सकती है. ओके Okay, ma'am. एनीबॉडी एल्स? Ma'am, can you explain phytohormone again? Sure. Phyto means, phyto word is used for plant beta. If you want, we can give it another highlight. कि अगर plant word जहां भी आएगा, हम उसके लिए phyto word use करेंगे, और हार्मोन के लिए हार्मोन. तो प्लांट हार्मोन माने फाइटो हार्मोन. ठीक है, और यही फाइटो हार्मोन केमिकल प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, तो इसीलिए हम इसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं, पीजीआर. फाइटो हार्मोन भी बोल सकते हैं,
प्लांट हार्मोन भी बोल सकते हैं और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोल सकते हैं, तीनों एक ही बात है, पर्यायवाची वर्ड है ये हिंदी की भाषा में, दे आर सिनोनिम्स। Okay, ma'am. मैम जैसे यस मैम जैसे ह्यूमन बॉडी में हाइपोथैलेमस होता है हार्मोन्स को सेंड करने के लिए, प्लांट्स में कैसे कौन मैसेज पहुंचाता है कि प्लांट इतने हार्मोन्स रिलीज करे, ये हार्मोन्स रिलीज करे? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो हाइपोथैलेमस इज अ कंट्रोल सेंटर, इट्स अ न्यूरल ऑर्गन, ठीक है। हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, वो हार्मोन्स बनाता है और फिर वो हार्मोन्स वाया ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है टू रेगुलेट। लाइकवाइज प्लांट की बॉडी में जो हार्मोन बनाने वाले सेल्स हैं वो स्पेसिफिक लोकेशंस पे प्रेजेंट होते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू रिमेम्बर योर 9th क्लास का प्लांट टिश्यूज थोड़ा थोड़ा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। Yes, ma'am. हाँ, अब क्योंकि प्लांट हार्मोन्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, इसका मतलब वो ग्रोथ करते हैं। हाँ, growth माने cell division. Why did I introduce the word cell division? Just to clarify this concept only. Good that you asked. अब plant में cell division करने वाले cells कौन से होते हैं? Who will tell? Please, can I choose? Don't answer. Let me get tally with your names also. So I have few people who are answering, but I want to choose. Let's see if we have anybody from my letter J. Who's from letter J? Jayadita. Jayadita, do you know the answer? कि कौन से Yes, ऐसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट टिश्यूज होते हैं जो डिवाइड करते हैं? Ma'am, the plant tissues that divide are the simple permanent tissues. No, baby. Permanent tissues do not divide. Okay, who's another one? Jigyasa, Jigisha, do you know which plant tissue? Yes, ma'am. Meristematic tissues. Perfect answer. Meristematic tissues are the ones which divide. Okay, next question. Just so that it answers the question you asked, bache. Can anybody tell me the type of meristematic tissue? Hint दे देती हूँ, जिस जगह पर वो पाए जाते हैं. Their location gives them their name. I want hand raises, please. Aryan. Ma'am, on the top of the shoot, apical meristem, and Very lateral meristem on basically the width of our stem, and internode meristem on the node. Intercalary. Devesh wants to answer too. Okay, thank you, Aryan. Yes, Devesh. Devesh wants to enter, sorry. Anybody else? Abhishek and Aryan. Abhishek wants to say something. Ma'am, I wanted to say intercalary. Intercalary. Aryan, I'll correct you. Okay, yes, Shaurya also has an answer. Shaurya, please shoot. Yeah, so there are basically three places where meristematic tissues are located. On the tip of the plant, where it promotes the upward growth of the plant, that is apical meristem, and on the bark of the plant, it promotes basically the lateral growth of the plant, as the name suggests, it's known as lateral meristem, and on the tips of the internodes, which basically promotes the growth of the branches, is called intercalary meristem. Okay, all of you are fairly correct. Huh? I'll just make small corrections. What is that small correction is? कि आपने बोला intercalary वाला जो point था, उसको थोड़ा सा मैं refine कर दूंगी कि जो growth है वो by cell division होती है और plants में जो dividing cells होते हैं, cell division is by the virtue of meristematic cells. These meristematic cells or meristematic tissues, they are present at 3 locations. Just be very specific of the location. You know it. Just थोड़ा सा refine करो. Tip को apex भी बोलते हैं और tip ऊपर भी होती है, tip नीचे भी होती है ना? तो shoot tip और root tip बोलते हैं उसको. दोनों पे present होते हैं. तो सबसे ज्यादा मेजर साइट्स बेटा जहाँ पे प्लांट हार्मोन बनते हैं जिससे वो ग्रोथ को सेल डिवीजन से रेगुलेट करते हैं,
is shoot tip and root tip. I hope this answers your question, beta. Ki where or which cells are responsible for regulating the growth? It's the places where they divide. Okay, that is shoot tip and root tip. Majorly. Other places where cell division happens, where growth happens, and plant regulate their growth with the help of these chemicals are at nodes. जो नोड पे प्रेजेंट होता है, नोड एक जगह होती है ना शूट में, नोड और इंटरनोड शूट में प्रेजेंट होता है, रूट पे नोड इंटरनोड नहीं होता है. तो दिस नोड रीजन इज प्रेजेंट ओनली इन शूट, and this type of meristematic tissue is known as intercalary. Apical meristematic, intercalary meristematic, and the last one is lateral meristematic, which is present on the sides. Bark पे नहीं होता. Side का मतलब है कि जो आपकी टिश्यू लेयर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, ह्यूमन बॉडी में स्किन है, स्किन के नीचे मसल है, मसल के नीचे बोन है, ठीक है. अगर कोई टिश्यू स्किन और मसल के बीच में आ जाए, जैसे कि फैट, हाँ, जैसे कि यू कैन ऑब्जर्व दिस टिश्यू, तो दिस इज फैट. तो वो फैट अगर बढ़ता जाएगा तो बंदा मोटा होता जाएगा और गोल हो जाएगा. इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इन विड्थ. डू यू एग्री कि मेरी बॉडी में सर्कुलर अरेंजमेंट है टिश्यूज का, ऊपर स्किन है, फिर नीचे मसल है, फिर उसके नीचे बोन है. अगर स्किन और मसल के बीच में फैट आता ही जाएगा तो बंदा मोटा ही होता जाएगा. हाइट में तो नहीं बढ़ेगा, किस में बढ़ेगा? विड्थ में बढ़ेगा. तो ये जो ग्रोथ होती है ये विड्थ में होती है. ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक करता है, जो लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होता है. दिस लेटरल मेरिस्टेमेटिक इज प्रेजेंट बिटवीन द लेयर्स ऑफ द प्लांट टिश्यूज. तो ये साइड्स पे नहीं होता. इसका नाम लेटरल इसलिए होता है क्योंकि ये साइड्स को ग्रो करता है, ये विड्थ पे ग्रो करता है, इसलिए इसको लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं. इट इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लांट टिश्यू layers. Is this thing clear to all? Yes, ma'am. Where we have cell division. Ma'am, but ma'am, cell division is clear, but from where does the hormone come that tells the cell to divide? Apex, that's what I'm saying. यहाँ से hormone बनता है, ठीक है? It gives the message to the next cell which is present just adjacent that you have to divide, and when it divides, it keeps on collecting. Division के बाद उसकी growth होती है, growth के बाद उसकी maturation होती है, ठीक है? And then it keeps extending. Okay, and ma'am, what are the types of hormones in plants? We are going to talk about अभी. यहाँ तक clear है सबको? Yes. Okay, Yes, ma'am. let's go a bit faster now. Let's talk about hormones. There are two types of plant hormones principally. One, which increase growth, and the other, which do not decrease it but prevent it. एक है जो ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ग्रोथ करो. एक है जो बोलते हैं कि बस अब और ग्रोथ नहीं करनी है. ऐसा नहीं है कि जो हुई ग्रोथ है उसको हटा देंगे, ठीक है? दे विल जस्ट स्टॉप इट, कि और मत करो, ठीक है? इस स्टॉप को हम रिटार्ड बोलते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ वापस हो जाती है. So whenever we say that there is a growth promoter, that means it will stimulate growth, it will give a message to go for further growth. And when I say something retards growth, doesn't mean it goes backward, it's reversible. It means it will not allow further growth. Okay, so they are increased growth करने वाले या growth promoting, let's take it this way, and growth inhibiting. ठीक है बेटा? Growth promoting and growth inhibiting. Inhibiting का मतलब रोकने वाले, कि और मत करो, don't do further growth. These growth promoting plant hormones are three: auxin, cytokinin, gibberellin. There are three: auxin, cytokinin, gibberellin. And there are two which are growth inhibiting. और बस अब और ग्रोथ करने की जरूरत नहीं है, जितना तुमने बढ़ना बढ़ाना था बढ़ लिया. Now it's time for you to
act and perform a specific function, है ना, जिसको हम maturation बोलते हैं. तो ये जितने भी inhibiting वाले होते हैं बड़े maturely act करते हैं, कि कुछ ऐसा है जो stress situation में act करते हैं कि अभी बहुत तंगी है, अभी कोरोना टाइम आ गया है, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, हमें ये करना है और हमें ये नहीं करना है, हमें इस चीज पे स्पेंड करना है, इस पे स्पेंड नहीं करना है. दैट्स अ स्ट्रेस रेगुलेटर, मैच्योर एक्ट करने वाला हार्मोन, which we say is the stress hormone of the plant body, जिसको हम एब्सिसिक एसिड बोलते हैं. पानी बहुत कम है और पानी आएगा नहीं, तो हमें ज्यादा पानी वेस्ट करना नहीं है, तो we don't have to lose water from the plant body. Which hormone keeps a check on the loss of water? जो mature है, जिसको पता है कि इसको अभी खपत करना है, इसको नहीं करना, जो maturity की तरफ act करता है. These are mature hormones, which are two. One is abscisic. Sorry for the spelling. Abscisic is ABSCISIC. Abscisic hormone or abscisic acid hormone. The other is ethylene. Ethylene is a gaseous hormone. आप लोग कार्बन and its compounds में पढ़ते भी होंगे. CH triple bond CH वाला. It's a gaseous hormone. The only plant hormone which is gaseous in nature. Ethylene. ये growth inhibiting है. ये maturing hormones होते हैं, ये mature act करते हैं. And इनमें से सबसे important बात, abscisic acid is a stress hormone. माने वो stress situation में act करते हैं. जैसे human body में adrenaline, non-adrenaline होते हैं ना stress situation में, fear, fight, flight में, वैसे ही plant की body में भी ऐसे होते हैं जो stress situation में होते हैं. और सबसे बड़ा stress होता है plants के लिए पानी. Prime importance कि पानी है या पानी नहीं है. Can anybody tell me by which process do plants lose water? 99% of the water is lost in the form of Transpiration. by transpiration. Which plant hormone keeps a check on transpiration or prevents loss of water by transpiration, prevents excessive transpiration? Abscisic acid. ये water loss होता कहाँ से है? कैसे उड़ता है ये पानी? Stomata. So it checks excessive transpiration by closing or opening the stomata. कैसे करेगा? अगर आपको चाहिए by sending message to the guard cells. बंद कर दोगे ना? So by by sending message closing to the the guard cells. stomata. Is this thing clear? Another thing. अब जैसे simple सा, I'll tell you one thing. You want to renovate your house, huh? And it's Corona time, COVID time, plus abhi foot and mouth disease also. Would you like tens of people to come into your place and work, which you're not even aware of कि उनको ये disease है या नहीं है, पता नहीं mask पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे? Would you like such people to come and work in your place? No. No. You would not construct, you would not build your house at this hour. Not a logical decision to make. ठीक है? Likewise, जो mature लोग होते हैं वैसे decision नहीं लेंगे. Plant भी ऐसा ही करता है कि कोरोना टाइम है, स्ट्रेस टाइम है, मुझे अभी जो मेरे पास सीड है, जितना है ग्रो हुआ उसको वैसा ही रखता हूँ. अब मेरे को सीड को ग्रो करके उससे सीडलिंग बनाना है, उससे प्लांटलेट बनाना है, उससे प्लांट बनाना है. इज लाइक मुझे एक स्टोरी से, दो स्टोरी से, तीन स्टोरी से, चार स्टोरी का घर बनाना है. इट्स दैट सॉर्ट ऑफ अ थॉट. बट आप कोरोना टाइम में ऐसा नहीं कर सकते, स्ट्रेस टाइम में ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है? तो जब भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं, जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं, लाइट, टेम्परेचर, एयर, फूड रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही होती है, तो प्लांट कहते हैं कि जितना अभी मुझे लाइट मिल रहा है, एयर मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, जितना मैं खाना बना पा रहा हूँ, मैं अपने लाइफ प्रोसेसेस को चला पाऊँ, गाड़ी चलती रहे, वही बहुत है. सीड को ग्रो करने की एनर्जी, इतना टाइम, इतना रिसोर्स, इतना मनी मेरे पास नहीं है, तो अभी सीड को बोलूंगा कि तू ग्रो मत कर, उसको थोड़ी देर के लिए रुक जाने को बोलूंगा. एंड दिस time period and this process by which it says seed रुक जा अभी grow मत कर is known as seed dormancy. वो seed को dormant ही रखता है कि let's stop the construction for a while till the time the unfavorable condition grows. This is a mature decision. It is stopping the growth only to take care of the plant. It is not stopping the growth as a Hitler कि नहीं मैं तुझे कुछ नहीं करने दूंगा. It's just stopping for its own good कि अभी stressful condition है, अभी ग्रोथ हमारा एजेंडा नहीं है, अभी सस्टेन करना हमारा एजेंडा है. तो उस टाइम पर हम ये एनर्जी से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ना बनाकर हम
उस एनर्जी को सेव करते हैं, बाद में हम उसको यूज कर लेंगे, ठीक है. So it kind of suspends the growth of the seed, and this is known as that it makes the seed dormant. या हम बोलते हैं it promotes seed dormancy, so that it can use the energy for the time period for the maintenance of the life processes of the plant and does not waste it in excess growth of the seed in stressful conditions. Is this thing understood to all? कि dormancy करेगा seed की, प्लांट का एक्सेसिव वाटर लॉस नहीं होने देगा, ठीक है. अच्छा, एक और चीज इसी से रिलेटेड हम बात करते हैं. जब आपके पास इतना स्ट्रेस होता है, हाँ, तो आप क्या करते हो कि यार ये चीज भी एक्सेस है, ये चीज भी एक्सेस है सबको. और डू यू नो अबाउट थैंक्सगिविंग, और यू नो अबाउट दिवाली की सफाइयां, और यू नो अबाउट रेनी सीजन मॉस्किटो ब्रीडिंग. व्हाट डू वी डू? जहां पे भी वाटर लॉग होता है उसको हटा देते हैं. या दिवाली पे अलमारियां साफ करते हैं तो जितने भी एक्सेस कपड़े होते हैं सब निकाल देते हैं. ऐसा ही करते हैं ना कि अभी टाइम है कि इसको साफ करो और निकालो, लेट्स गेट रिड ऑफ द एक्सेस. सेम वे, जब आपके पास इतना स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है तो प्लांट कहता है इतना भार मैं नहीं रख सकता. एक जगह पे फ्लावर लटक रहा है, एक जगह पे फ्रूट लटक रहा है, इतनी सारी पत्तियां आ गई हैं, आधी पत्तियां येलो हो गई हैं, मेरे किसी काम की नहीं है, इनका मुझे क्या करना है? Get rid of them. I don't want these. These are creating excess stress for me. So it gets rid of the fruit, it gets rid of the flower, it gets rid of the yellow leaves which are not functioning. Chlorophyll तो है नहीं, खाना तो बनाने नहीं, तो किस काम की है? छोड़ो इनको. So this is called the falling of the mature fruit, falling off of the mature leaf, falling off of the flowers which are not producing fruit anymore. This is known as abscission. एक divide कर देना, अलग कर देना, abscission layer form कर देना, तभी उसका नाम है abscisic acid. It forms a abscission layer and it leads to detachment of flowers and fruits. Is this thing clear? Causing of abscission layer and detachment of flowers and fruit done by which hormone? Abscisic acid. So this is all about abscisic acid, which is a plant growth regulator that basically is a stress hormone, the most important hormone. My favorite is I always take it in the first place. Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, this stress hormone, ma'am, how this stress occurs, ma'am, like due to the deficiency of food and. See, stress can be any condition for plant. जब उसको enough sunlight ना मिल रही हो और वो खाना नहीं बना पा रहा हो. मान लो आज rainy day है, sun निकला ही नहीं. So it was not able to perform photosynthesis. It was not able to do transpiration. It was not able to conduct water. Sunlight नहीं होगा, transpiration pull नहीं होगा, water conduction नहीं होगा, तो सब parts को water नहीं मिलेगा, तो उनके लिए वही stress condition है. तो उस टाइम पे वो excessive growth को रोक देंगे कि अभी growth करने का टाइम नहीं, अभी जितनी एनर्जी है उससे बस अपना खाना पीना चलता रहे, वही बहुत है. So it can be a short term stress, it can be a long term stress. कुछ भी stressful हो जाती है. कितनी बार ऐसा होता है कि बहुत छोटी सी चीज आपको परेशान कर देती है, यार मैं अपना पेन भुलाया. Not a thing to stress, but maybe that pen is too possessive. You're too possessive about it, gives you stress. कोई ले जाएगा तो, खराब हो गया तो, किसने पकड़ लिया तो. So it's like that. Plant के लिए भी ऐसा ही होता है. There are minor stresses also, there are major stresses also. But everything is controlled by abscisic acid. Yes, ma'am. Okay. Excuse me, ma'am. Right, abscisic acid? Excuse me, ma'am. Yeah. Ma'am, from where do ethylene travel? It's a gaseous hormone. It diffuses from one cell to another cell. Not through xylem and from like other. No, it does not need a medium. The gases can always transport from one to another. ऐसे ही diffuse करते हैं. उनको किसी medium की जरूरत नहीं है. Atmosphere है. Okay, ma'am. Even I don't know तुमने कभी सुना है कि नहीं सुना, खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदलता है. सुना है ये वाला मुहावरा? सुना है? कहते सड़े हुए केले के साथ दूसरा केला मत रखो, वो भी सड़ जाएगा. Have you ever observed this phenomena? Yes, ma'am. Yes. Why? It's one mature thing forcing the another thing to mature. Gaseous hormone. वो इथाइलिन हार्मोन रिलीज कर रहा है, बगल वाले को देगा, वो भी इथाइलिन से मैच्योर हो जाएगा, वो भी काला हो जाएगा. Ethylene is known as a ripening hormone. So it travels like that. Most of the tomatoes ऐसे ही गल जाते हैं एक के साथ एक. Okay, ripening of tomato में हम actually ethylene gas का यूज करते हैं. तो हम पहले
Yes, please. मैम जो फाइटो हार्मोन है ये उनके टाइप्स हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग और ग्रोथ इनहिबिटिंग Yes, बेटा. हार्मोन जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है, आप हवा का स्पीड बढ़ा भी सकते हो, हवा का स्पीड घटा भी सकते हो, तो वैसे ही आप ग्रोथ प्रमोट भी कर सकते हो, आप ग्रोथ इनहिबिट भी कर सकते हो, like that. ओके मैम. So first let's write about plant inhibitors or plant inhibiting growth hormones. One on either side. One prime function of each. This side let's write about abscisic acid, this side let's talk about ethylene. Short में we did about 5 things with respect to abscisic acid. What were they? Controls excess growth. Rather, I can say stops excessive growth. Prevents water loss by transpiration via stomata. That means shut, closes stomata. Stomata band, transpiration band, prevents water loss. So it helps to save water in stressful condition. Promotes seed dormancy. अभी seed रुक जा, grow मत कर, stressful condition है. ठीक? Promotes abscission of mature flower fruit seeds. Flower fruit seed. Or you can say flower fruit leaves. Falling off or detachment. अब जब abscission layer बन जाएगी तो वो detach हो जाएंगे of these 3 things only: flower, fruit and leaves. So because of this stress management, we say abscisic acid is the stress hormone. Stress manager है ये plant की body का. Any doubts with respect to abscisic acid, please? Ma'am, difference between 4th point and 5th point. एक होता है फूट डालना, हाँ दोस्ती में, तेरे को पता है भाई तेरे बारे में वो ये बोल रहा था, ठीक है, अभी फ्रेंडशिप टूटी नहीं है, ठीक. So this is abscission layer form करना माने फूट डालना. और एक होता है आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, बिल्कुल डिटैच हो जाना. That's the difference. So first there is abscission layer formation. Next is detachment, end of friendship. That's the difference. It's a subsequent effect of abscission layer formation. पहले अलग होते हैं फिर detach हो जाते हैं. There's a separate layer formation and then followed by detachment. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, what you have written the first point, ma'am, after control. Stops. I'll rewrite it. Okay. Move to ethylene. Yeah. Mom, so like when does this hormone or wherever this hormone is produced, how does it know that the leaves are mature or the flower has matured? Again, there are messages which are done with the help of other hormones. When we know that there is no water, there is turgidity. एक चीज होती है जब plant swollen होता है तो उसको turgidity बोलते हैं, है ना? Plant में जब salt content ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं कि it is concentrated. So likewise, there are chemicals in the plant which give it certain properties. Water ज्यादा होगा तो वो turgid होगा, water कम होगा तो वो flaccid होगा, ठीक है. तो हमें मालूम है water कम है वो flaccid है, तो वो सेल ऑटोमेटिकली एब्सिसिक एसिड उसकी तरफ डिफ्यूज करता है कि इसके पास पानी कम है, इसमें से और पानी लूज होने मत दो. सो सर्टेन प्रॉपर्टीज लाइक दिस
attract abscisic acid and prevent further growth, further loss of water from such areas. Okay, ma'am. Anything else? Shall we move to मैम the ये प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस एंड ऑल ये भी हार्मोन्स के मैसेज देने के बाद ही होते हैं? No. Photosynthesis is a process which is not directly under the control of hormones, but yes, since photosynthesis requires water, since photosynthesis requires exchange of gases, कि जब तक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगा तब तक कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन नहीं होगी, उसकी रिडक्शन नहीं होगी इनटू ग्लूकोज, है ना? एंड ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू स्टोमेटा, एंड स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड. So I will not say that abscisic acid directly controls photosynthesis, but indirectly by controlling the opening and closing of stomata. Okay. And ma'am, does the releasing of O2 is also controlled by abscisic acid? Yes, because it is regulated by stomata. Okay. अगर photosynthesis ही नहीं होएगा तो ऑक्सीजन कहाँ से जाएगा, है ना? So either ways, कार्बन डाइऑक्साइड का आना, ऑक्सीजन का जाना is one of all the same thing with respect to photosynthesis. मैम एब्सिजन एक बार वापस से बता दो. Abscission layer formation. It's a kind of जैसे एपिथेलियल टिश्यू में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना, जिसके ऊपर सेल्स को अरेंज करते हैं. तो मान लो आपके पैरों के नीचे से जमीन खींच लेना, ठीक है, आपके बीच का सीमेंटिंग मटेरियल हटा देना और उसके बीच में एक एब्सिजन लेयर डाल देना. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एब्सिजन लेयर, कि अब आपको डिटैच करने ही वाले हैं ऐसे. ओके, ऑलराइट. Now I have to go to ethylene. We'll take further doubts later. ठीक है? It's a gaseous hormone. Point number 1. It moves by diffusion. ठीक है? It inhibits growth and कहीं ना कहीं कहते हैं it inhibits longitudinal growth. माने height, लंबाई को बढ़ने से रोकता है. ठीक है? अगर कोई चीज लंबाई को बढ़ने से रोकती है, इसका मतलब वो विड्थ को बढ़ने से नहीं रोकेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है. तो हम बोलते हैं इट्स अ गैसियस हार्मोन. इट रिड्यूसेस वर्टिकल ग्रोथ, सिंपल वर्ड्स में हम लिखे तो, एंड इट प्रमोट्स हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, इंक्रीजेस हॉरिजॉन्टल, ट्रांसवर्स, लेटरल, विड्थ ग्रोथ. Okay, and it's a ripening hormone, maturing, ripening of fruits hormone. बनाना से बनाना, खरबूजा से खरबूजा. ठीक है? एंड सिंस ये ग्रोथ प्रमोट कर सकता है ना, क्योंकि ये वर्टिकल ग्रोथ को रोकता है बट हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सेल डिविजन करता है. ठीक है? तो इसको ऐसा लगता है कि चीजों को मैच्योर करो. इट्स अ मैच्योरिंग हार्मोन. हाँ, इट्स अ राइपनिंग हार्मोन. इसको हम राइपनिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, इसको हम मैच्योरिंग हार्मोन के भी नाम से जानते हैं. इसको ना बच्चों जैसी बातें पसंद नहीं है. प्लीज यू नो एक्ट लाइक अ मैच्योर पर्सन, डोंट बी एन इमैच्योर टाइप का बंदा है. तो इसको सकते कोई भी छोटा नहीं रहना चाहिए, सबका दिमाग तेज होना चाहिए, सबको बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए. तो जो सीड डॉर्मेंट होता है, उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है, जो बच्चे जैसा होता है, उसको लगता है क्यों है ये बच्चे जैसा, नो व्हाई इज इट एक्टिंग किडिश, लेट इट ग्रो. तो इट काइंड ऑफ प्रमोट्स सीड ग्रोथ, इट काइंड ऑफ प्रमोट्स प्लांट एम्ब्रियो कि लेट इट ग्रो, लेट इट बिकम मैच्योर. बच्चे पसंद नहीं है मुझे, है ना, मुझे वो डायपर चेंज करना बिल्कुल पसंद नहीं है. लेट एवरीबॉडी ग्रो. सो इट्स अ ग्रोइंग हार्मोन. इट प्रमोट्स plant embryo growth inside seed. इसका मतलब वो सीड को डॉर्मेंट रहने देगा या उसकी डॉर्मेंसी तोड़ देगा. Anybody? It will break dormancy. Ma'am, second It option. breaks seed dormancy. So it breaks seed dormancy. Clear? Because it doesn't like kids. Easy. Also,
It only, I hope you have heard that a person who's 6-year-old or 60-year-old is like a kid only. 6 साल का बच्चा भी बच्चा है और 60 साल के ऊपर का जो एज वाले लोग होते हैं वो भी बच्चे जैसी बातें करते हैं. You reverse age after 60. Heard of it? Yes, तो बहुत ओल्ड लोग होते हैं वो भी बड़े रिजिड होते हैं. नहीं हमें तो यही करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है. Either do my way or highway. So उसको वो भी पसंद नहीं है. We act mature. तो वो कहते हैं कि जो बुढ़े लोग हैं प्लीज वो भी मुझे नहीं चाहिए मेरी बॉडी में. सो जो बहुत ज्यादा ओल्ड फ्रूट्स है या जो बहुत ज्यादा ओल्ड लीव्स है या जो बहुत ज्यादा ओल्ड फ्लावर्स है वो कहते हैं आप भी जाओ. नॉट रिक्वायर्ड. सो abscission and detachment. Abscission and detachment of old flower, fruit, leaf. Flower, fruit, leaves. Clear है? Inhibiting hormones, abscisic acid and ethylene. Shall we move to promoters now? yes. मैम अगर क्वेश्चन है कि इथाइसिन एक ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, इनहिबिटिंग हार्मोन है, बोथ ऑफ द अबव, तो क्या Both लिखेंगे? of the above. बोथ ऑफ द अबव. It's an amphibolic hormone. It's catabolic as well as anabolic. कहते हैं ना growth promoting भी है, inhibiting भी. It's amphibolic. Promotes also, inhibits also. If a question comes, both of these will be the correct answer. Okay? Ethylene. Yeah, ethylene. Okay. All right. Plant growth promoters. Plant growth promoters. अभी जो प्रमोटिंग वाले होते हैं ये 3 है. Auxin. Let's take different color for each. Cytokinin and gibberellin. देखो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एक हार्मोन एक ही काम करता है या उसके अलावा वो कोई और काम नहीं करता. ये सारे हार्मोन मिलजुल कर काम करते हैं. बट everyone has their own primary effect. ठीक है. So whatever we are talking about right now is not that it's restricted to this hormone. It's just that कि वो उसका primary function है. ठीक है. ज्यादातर एक तरीके का काम एक टाइप का हार्मोन करता है. There may be an overlap, but mostly one type of function is performed by one type of hormone. And auxin is the most prevalent hormone in the plant body. जो सबसे ज्यादा ग्रोथ करता है जिसकी वजह से मैक्सिमम हाइट इंक्रीज जो होती है. ठीक है. टिप पे ग्रोथ करने वाला सबसे मेजर हार्मोन जो रूट टिप शूट टिप जो दोनों में होता है, रूट में भी होता है शूट में भी होता है, टिप पे ग्रोथ होती है, हाइट जो बढ़ती है वो कौन से हार्मोन की वजह से होती है? वो ऑक्सिन की वजह से है. तो जो टिप पे है, जो अपाइकल टिश्यू पे है, जो हाइट ग्रो करता है, तो हम बोलते हैं ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपाइकल डोमिनेंस. एक वर्ड इसके साथ हम रिलेट करते हैं दैट ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपाइकल डोमिनेंस because it is in maximum concentration at the tips. Ma'am, what do you mean by apical? Tip, apex, top, point, edge. I don't know more synonyms. Okay. Okay, ma'am. Tip, apex, maximum concentration. Though it is present throughout the plant body, but it is at maximum concentration at the tip, apex, responsible for vertical growth. Cell division होगी, vertical growth होगी, height increase होगी. Increase in height, जिसको हम बोलते हैं apical dominance. अब जब वो हाइट बढ़ा रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सेल डिवाइड कर करके छोड़ देगा.
सेल को ग्रो भी करेगा, सेल को मच्योर भी करेगा कि जो बढ़ा हुआ सेल है वो अपना फंक्शन भी परफॉर्म करे. And this process in plant body, when a particular cell attains a specific function, attains a specific location, attains a specific size, and then stops dividing, this process of loss of the ability to divide and attain a fixed shape, size, function, location is known as dash. Anybody can tell me what is it known as? Starts with the letter D. Differentiation. Perfect. It's called differentiation. तो ऑक्सिन सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन नहीं करता है. ऑक्सिन सेल डिवीजन के साथ साथ सेल ग्रोथ, दैट इज एनलार्जमेंट, और उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन अटेन करना, साइज अटेन करना, लोकेशन अटेन करना, माने उसकी डिफरेंशिएशन भी करता है. सो वी विल से दैट it not only promotes cell division, but it also promotes cell enlargement and cell differentiation. बात समझ में आती है? What is differentiation? Just don't read words which you don't know. You must understand what cell differentiation means. Maturity, attaining a fixed shape, size, function, location, and not dividing anymore is called cell differentiation. Clear to everyone? मैम सेल ग्रोथ भी बोल सकते हैं ना इसे? देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो डिफरेंस है, हाँ, अब जैसे मैं बोलूं इंडिया इज ग्रोइंग एंड इंडिया इज डेवलपिंग, डू यू सी अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस इन इट? यस मैम. Same way, growth is maybe if I'm increasing in area or if I'm increasing in population, I'm growing. But when I say I'm developing, I'm neither increasing in volume nor am I increasing in area, but I'm specializing. My economy is growing, my economy is developing, my industry is developing, I'm making more money, I have more talent searches and hunts and acquisitions. So I'm developing means I'm maturing, I'm specializing. So that is the difference between growth and development. Growth is just increase. Development is specialization. So differentiation is equal to specialization. You can say development. And in other words, differentiation Meristematic to leads to permanent. development. I'm sorry? I'm meristematic to permanent. नहीं, meristematic सिर्फ divide करता है. It's undifferentiated. Ma'am, can we say that it converts into permanent tissue? Yes, After? you can say that. And on that note, very good that you pointed out. Star question mark. Though I've been told to restrict to the topic, but since you put it up, so I'm telling you, ऑक्सिन सेल डिवीजन तो करता ही करता है, साथ में ऑक्सिन डिफरेंशिएशन या परमानेंट टिश्यू फॉर्मेशन करता है. ठीक है, अब अगर आपके पास कोई टिश्यू कल्चर का एक्सपेरिमेंट है और उसमें सेल डिवीजन हुए जा रही है, अगर आप उसमें ऑक्सिन डाल दोगे ना तो वो सेल पता है एक मैच्योर टिश्यू बन जाएंगे. डू यू नो व्हिच टाइप ऑफ मैच्योर टिश्यू? आई विल गिव यू 3 ऑप्शन: रूट, स्टेम, लीफ. Ma'am, stem. Okay, how many vote for stem? Okay, raise hand. Let me just look at you. I like class participation. 1 sec. 2 people raised hand. Just 2. We have Shashwat and who else wants to say? Question. I said कि अगर आपके पास एक टिश्यू कल्चर का एक्सपेरिमेंट है और उसमें सेल डिवाइड किए जा रहे हैं, सिर्फ डिवीजन हो रही है, मैंने सडनली बहुत सारा ऑक्सिन डाल दिया, तो वो डिवीजन के साथ साथ उनकी मैच्योरेशन भी करेगा. तो किस टाइप के सेल में मैच्योर होंगे? वो सेल टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू ऑर्गन बनाएगा. किस टाइप का ऑर्गन बनेगा प्लांट की बॉडी का? रूट बनेगा, स्टेम बनेगा, लीफ बनेगा. सो वी सेड हाउ मेनी वोट फॉर स्टेम? I have Shashwat, I have Riddhima. Who else? That's it? Okay, I have Avik also. Voting over. Thank you. You can please put your hands down. How many say that it is going to convert into leaf? Aryan, Tanvi. Shashwat, you can raise hand only for one of the conditions. I won't buy your. Aditya? 3 only. 4. Okay, Nishta also says so. 5. Seher also says so. Voting time is going to get over. Time up. How many say it is going to get converted into root?
Only one. Devesh and Veer. How about the others? 3 plus 3, 6 plus 2, 8. And I have got approximately 25 participants. How about the rest 17? No viewpoint? No worries. Correct answer is root. Auxin promotes root formation. ठीक है? Auxin promotes root formation. ठीक है? वो root formation करता है. Maturity root में लेकर आता है. But division stem की ज्यादा करता है. So these are two opposite things. Shoot की growth करेगा. Root की development करेगा. These are two opposite things that you need to remember with respect to auxin. It is found in more concentration at shoot tip. वहाँ पे division करेगा. But where we have root maturation, वहाँ पर आपको auxin root maturation करता है. Shoot में division करता है, root में maturation करता है. Will you remember this? कि what does auxin promote? Division at shoot tip and maturation at root tip. तो अगर मैं apex की बात करूं, apex पे maximum concentration, तो let's talk about root apex and shoot apex. Let's put it in another point. Shoot apex, more concentration, increased growth, and root apex, maturation, differentiation. All right. Okay. That means that, like in the root apex, there comes a stage where the cells do not divide further. Yeah. In every plant tissue, there comes a stage, if they just keep dividing, they will never perform a function. So there has to come a time when they become mature and start performing a function and become permanent. Ma'am, is there reason in hormones, ma'am? Why? Because ma'am, a coconut tree is longer and a banyan tree is more wider than rest of the trees. Many factors for why a plant appears in a particular type of height or width or branching. सिर्फ एक चीज इसको decide नहीं करते. There are certain genetic factors also, if I must tell you. Coconut is, I'm sorry? Surroundings, the environment they get, I guess. Environment has a very less favorable role, but yes, genetics does play a very important role. हम बोलते हैं ना कि different species है, different genuses है. ये different species है, ये different genuses क्यों होते हैं? Because of their different genetic combinations. ठीक है? So if I have a coconut palm tree, I have a banyan tree, they belong to two different species. They belong to two different families with two different genetic sets. Huh? Their banyan tree is highly branched. Coconut tree is one single stem with a crown of leaves. There is no stem branching. So this branching of stem is not controlled by hormones, it's controlled by genes. So saying कि उसमें hormone ये वाला होता है इसलिए वो ज़्यादा लंबा होता है और branching नहीं होता है would be wrong. Okay? Yes. Yes. So if I look at other functions of auxin, these are basic functions. कि टिप पे ज्यादा होता है, शूट टिप पे ज्यादा होता है, डिविजन करता है, हमारे लिए मैच्योरेशन ऑफ रूट करता है. इसके अलावा इसके स्पेशल फंक्शंस क्या है? If I may let you know, because auxin is a very important hormone. So there are certain special functions which are performed by auxin. Yeah, we can say economic importance. And special function. आपको पता है कि अगर एक प्लांट लाइट की तरफ बेंड भी करता है तो वो किसकी वजह से करता है? बिकॉज ऑफ ऑक्सिन. जब लाइट पड़ती है प्लांट की शूट टिप के ऊपर तो फिर ऑक्सिन रिलीज होता है. ऑक्सिन कहते हैं डिवाइड करो, ग्रो करो, तो उसकी ग्रोथ होती है. उस ग्रोथ की वजह से वो टिप बेंड हो जाती है बिकॉज हाइट बढ़ गई. अब वो इतनी बढ़ गई कि उसके पास सपोर्ट नहीं है तो वो झुक जाता है. तो दैट इंक्रीज इन सेल नंबर, दैट ग्रोथ leads to bending of the shoot tip towards the light.
This bending of the shoot tip towards light is known as phototropic movement. Anything which is a tropic movement is a movement because of growth. And growth is done by anything which promotes cell division. What promotes cell division at tip of the plant body? Auxin. तो हम बोलते हैं कि सबसे important काम auxin का क्या है? Phototropic movement. Bending of plant towards the light. And ये होता क्यों है? इसमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसको हम वेंट का एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अगर मेरे पास एक प्लांट की स्टेम है और यहाँ पर लाइट है, तो जो आपका लाइट एक्सपोज्ड रीजन होता है और एक अवे वाला रीजन होता है, दिस इज द रीजन व्हिच इज अवे फ्रॉम द लाइट. Here is where auxin is secreted more in amount. It promotes cell division, and because of the increase in height, this stem bends towards the light. And this bending towards the light is known as phototropic movement. ऐसे ही जो geotropic movement है towards the earth, जो roots show करती है, geotropic movement towards the earth, gravity, वो भी because of growth होती है, जो root show करती है in the direction of the light. अगर होगा तो हम बोलेंगे कि वो positive movement है, positive phototropic movement है, bending towards light है. वैसे ही bending towards the gravity वो root show करते हैं, geotropic movement है. ठीक है. Likewise, आपका प्लांट में अगर कहीं पर भी मुझे ग्रोथ करनी है, सेल डिवीजन करनी है, उसके लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए. एंड बाय व्हिच प्रोसेस डू वी फॉर्म एनर्जी इन द बॉडी? एनिमल की बात करें या प्लांट की बात करें, which life process is responsible for energy production? Anybody? Respiration. Promotes or stimulates respiration. जब तक respiration नहीं होगा, एनर्जी नहीं आएगा. तो it stimulates respiration. It also promotes growth, है ना? So it will be found more in a growing seed as compared to a mature seed. So promote seed growth, division, not maturation. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक ग्रोइंग सीड में ज्यादा ऑक्सीजन होगा या एक मैच्योरिंग सीड में ज्यादा ऑक्सीजन होगा, तो किसमें ज्यादा ऑक्सीजन होगा? मैम ग्रोइंग सीड. Growing seed will have more oxygen as compared to a mature seed. Lastly, एक बड़ा टिपिकल सा फंक्शन है, जैसा शूट टिप रूट टिप का था कि शूट टिप पे हाइट इंक्रीज करेगा, रूट टिप पे रूट मैचुरेशन करेगा. बेटा वैसे ही ऑक्सीजन एक और काम करता है, मैचुरेशन, ग्रोथ और फॉलिंग से. जैसे वो सीड को ग्रो करता है बट मैच्योर नहीं करता, वैसे ही जो कोई चीज ज्यादा मैच्योर हो जाती है उसको भी वो पसंद नहीं करता कि मुझे तो यंग यंग चीजें ही पसंद है, ये मैच्योर चीज मजा नहीं आया, है ना? तो वो क्या करेगा कि जो ओल्ड पार्ट्स होते हैं उनको तो गिरा देता है, बट जो यंग पार्ट्स होते हैं, जो प्री मैच्योर पार्ट्स होते हैं, उनको गिरने नहीं देता. क्योंकि एब्सिसिक एसिड का तो क्या काम है? अब बॉडी में मान लो ऑक्सीजन भी है, एब्सिसिक एसिड भी है, एब्सिसिक एसिड का पढ़ना भारी हो गया, वो गिराओ गिराओ सामान गिराओ, ठीक है? तो ऑक्सीजन आ जाता है उसको बताने के लिए कि अच्छा ठीक है गिराएंगे, बट चुनेंगे किसको गिराना है. यंग वालों को नहीं गिराएंगे, ओल्ड वालों को गिरा देंगे. तो एब्सिसिक एसिड भी उसकी बात मान जाता है कि चलो ठीक है ओल्ड वालों को गिरा देते हैं, यंग वालों को रोक लेते हैं. ठीक है, तो ओल्ड वालों ने तो एनीवेज भी गिरना ही है, एब्सिसिक एसिड भी उसको गिराने के फेवर में है, ऑक्सीजन भी उसको गिराने के फेवर में है, बट किसको गिरने से रोकता है ऑक्सीजन? इट प्रिवेंट्स द प्रीमैच्योर फॉल ऑफ योर फ्लावर्स एंड योर लीव्स, कि टाइम से पहले ना गिर जाए. So it prevents premature fall of flowers and leaves. Prevents premature fall of young flowers and leaves. Clear to everyone? Shall we move to cytokinin and gibberellin? Ma'am, Yeah. auxin promotes maturation in the root apex. Yes. Kinetic समझते हो?
Excuse me, ma'am. Yes, please. मैम सनफ्लावर क्यों हमेशा सन की तरफ बेंडेड रहता है? See, I'll tell you one thing. There is something called this. ठीक है? And there is something called this. एक ही जगह पे हिलते रहना is like movement. ठीक है? और ग्रो करके कहीं पर ऐसे झुक जाना is like growth and movement. There is a difference. हाँ? जब आपके पास ग्रोथ होती है और उसके बाद कोई चीज बेंड करती है, उसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं. अगर कोई अपनी जगह पर ही है बट कोई ग्रोथ नहीं हो रही, बस वो यूं 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 घूम रहा है, इट्स जस्ट रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड अ टाइप ऑफ नास्टिक मूवमेंट. वी विल टॉक अबाउट प्लांट मूवमेंट्स, डोंट वरी अबाउट इट. तो वो जो सनफ्लावर का मूवमेंट आप बोल रहे हो, इट इज ऑलवेज फेसिंग द सन, इट इज नॉट बेंडिंग टुवर्ड्स द sun. Okay, not a very classic example of phototropic movement. And since you asked it, phototropism पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होती है, on the region which is exposed to light or the region which is on the shaded side? Shaded side. Very, very, very important star question mark. Oxygen concentration is high in the shade area. Okay. Chale. Yes, ma'am. Moving to cytokinin. See, cytokinin, they say as the word in itself, cyto माने cell, kinin माने बढ़ाओ, चलो, number को बढ़ाओ, है ना? Kinesis is something when you increase, so it is responsible for rapid cell division. जल्दी जल्दी number बढ़ाओ, जल्दी जल्दी cell division करो. So which plant hormone is responsible for rapid cell division? Rapid is the keyword. Cell division तो oxygen भी कर रहा है, but जल्दी जल्दी वाली cell division कौन कर रहा है? साइटोकाइनिन. ठीक है? एंड ये ज्यादातर हाँ रूट से शूट की तरफ जाते हैं. जैसे हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन शूट में ज्यादा होता है. लेट्स कंपेयर द टू प्लांट बॉडी पार्ट्स. हाँ, कि ये मेरा शूट है और ये मेरी रूट है. हाँ, ऑक्सीजन इज मोर टुवर्ड्स द शूट. तो जहां ज्यादा होता है वहां से ट्रैवल करता है टुवर्ड्स द रूट्स. साइटोकाइनिन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट. अगर ये प्लांट की बॉडी है, ये शूट है और ये रूट है, सो इट इज मोर इन द रीजन ऑफ रूट्स एंड इट ट्रैवल्स फ्रॉम द रूट टू द शूट. तो एक अप्लाइड क्वेश्चन आ सकता है कि जहां आपकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब वो यहां से चलेगा टुवर्ड्स द अदर रीजन. सो दे दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं. ठीक है? ऑक्सीजन वर्टिकल हाइट इंक्रीज करता है, साइटोकाइनिन उल्टा काम करता है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसवर्स ग्रोथ. ये लेटरल ग्रोथ ज्यादा करता है, ये वर्टिकल ग्रोथ भी करता है. एग्जैक्टली ऑपोजिट टू व्हाट ऑक्सीजन डज. ठीक है? इट इज मोर इन रूट टिप एंड मूव्स अपवर्ड and moves upward. It promotes horizontal growth, prevents vertical growth. तो हम एक तरीके से कह सकते हैं it blocks apical dominance. ये apical dominance के उल्टा काम करता है. ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करने में ज्यादा बिलीव करता है, ये अपाइकल डोमिनेंस होने नहीं देता. ठीक? अब कोई चीज जो रैपिड सेल डिवीजन कर रही है, तुम लोगों ने सबने स्पाइडरमैन मूवी तो देखा होगा, बैटमैन की देखा होगा, एंड वो मैजिकल पोशंस भी देखे होंगे कि वो एक फ्लूइड डाल दो और एकदम से वुंड हील हो जाता है. ऐसा होता है हमारे मैजिकल हाइपोथेटिकल हैरी पॉटर वाला. हाँ, that if you put one drop it heals. मरा हुआ बंदा भी जिंदा हो जाता है. Am I right? Same way, आपका साइटोकाइनिन is like a healing. एकदम से जहाँ साइटोकाइनिन आया, फटाफट फटाफट सेल डिवीजन भी रिपेयर हुआ, वो चीज एकदम गायब हो गई, चोट लगी ही नहीं थी. ठीक है? तो वैसे ही स्पेशली आप, I don't know how many of you know it, but जितनी भी आजकल क्रीम्स की एड आती है, हाँ, गर्ल्स would be much aware of it.
your Garnier and everything, they have plant extracts, they have aloe vera extracts. You know the reason why? It's very rich in cytokinin. And cytokinin promotes cell division. It's very rich. It actually kind of also builds up collagen. So जहाँ cell division होती है वहाँ repair ज़्यादा होता है. जहाँ repair ज़्यादा होता है वहाँ कभी aging होती नहीं, wrinkles आते ही नहीं. तो अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपके पास एक ग्रीन लीफ है और आप चाहते हो कि वो हमेशा एवरग्रीन रहे, तो आप उसको कौन सा हार्मोन दोगे? Which hormone would you like to give? Which promotes cell division, which prevents aging? Which is that hormone? Cytokinin. So it is the hormone which delays aging. हाँ, very 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 important. Somewhere ऑक्सिन भी वो रोल प्ले करता है. अगर ऑप्शन हो साइटोकाइनिन ऑक्सिन बोथ ऑफ दीज, the best option will be both of these. Prevents aging क्योंकि दोनों ही सेल डिवीजन करते हैं, राइट? एक्सक्यूज मी मैम. यस. मैम ये स्किन की भी मतलब हमारी जो एजिंग होती है उसको प्रिवेंट करता है स्किन पे? No. I'm just saying that it promotes cell division and it can act as a cell division promoter even in other tissues. काम तो उसका वही है, रेगुलेशन तो वो वैसे ही करता है. प्लांट्स के लिए ज्यादातर ऐसा होता है एंड इसका एनिमल टिश्यूज पे भी इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया है ना. वी हैव एक्सट्रैक्टेड साइटोकाइनिन्स एंड ऑक्सिन्स फ्रॉम एनिमल टिश्यू. सबसे पहले ऑक्सिन को एक्सट्रैक्ट ह्यूमन यूरिन से किया गया था. इफ आई टेल यू केमिकली कि फर्स्ट एक्सट्रैक्शन जो देखा गया था, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हम खाते तो है ना, प्लांट को हम खाते हैं, हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट करती है, तो ये हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं. तो हमारी बॉडी की टिश्यू से हम उनको ज्यादा जल्दी से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं और उनके फंक्शन को पढ़ पाते हैं. We live on plants. We majorly eat plants as our dietary food, right? So वो सब कुछ प्लांट के अंदर ही जो हमारी बॉडी के अंदर ही तो जाता है. Likewise. Okay? Okay ma'am. Yeah. Is this thing clear to all? Function of cytokinin. Promote cell division. Root में ज्यादा होता है. Delay करता है aging. It is responsible for evergreen nature of leaves. Also, क्योंकि ये prevent करता है aging, it also prevents diseases, or you can say it's a kind of immune system, fighter cell of the or fighter hormone of the body. कि कोई disease भी नहीं आएगा, मैं बुढ़ा भी नहीं होगा, मैं बीमार भी नहीं होगा. So it kind of provides resistance to plants. Provides resistance to plants. Resistance against temperature, resistance against environmental conditions, resistance against diseases. Anything जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है, उसको protect करता है. It's a protective hormone, repairing hormone. Excuse me ma'am. Yeah. मैम फिर ये ट्रीज में ज्यादा होता होगा क्योंकि ट्रीज की जो एज होती है वो प्लांट से बहुत ज्यादा होती है. अगेन हर प्लांट के पास होता है, हर्ब्स के पास भी, श्रब्स के पास भी. एंड प्रोटेक्शन सिर्फ हार्मोन से नहीं होती ना. आपको प्रोटेक्शन बेटा सिर्फ अपने WBC से नहीं होती. व्हाट इफ यू डिड नॉट हैव स्किन? वुड यू बी एबल टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम सनलाइट? What if you did not have nails? Would you be able to protect your finger bends? So there is not one thing which does a function in the body. You have other things also. You need barriers also. तो जो trees होते हैं उनमें उनकी bark उन्हें protection करती है, which is a dead tissue. So you can't compare the protection which is provided by bark to the protection which is provided by hormones. Like you can't compare the protection which is provided by skin to the protection which is provided by WBCs. Comparison ही नहीं है. Okay? Yes ma'am. Like skin नहीं होगी तो डायरेक्ट जो हमारे मसल्स को डैमेज होगा. Yes, you can say so. Shall we move to gibberellin now? It's my last few minutes. I'll take of yours. Yeah. मैम ये एपिकल डोमिनेंस को ब्लॉक कैसे करता है? क्योंकि ये वर्टिकल ग्रोथ नहीं करता, ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है. तो ये किसी को लंबा होने ही नहीं देगा, उसको खींच देगा ऐसे हॉरिजॉन्टली कि आप लंबे नहीं होगे, आप ऐसे फिट वाइज ग्रो करोगे. ठीक है? चलिए, लेट्स मूव टू जिब्रेलिन. छोटा सा हार्मोन है,
सबसे पहले ना ये एक फंगस की वजह से देखा गया था. I hope you all know that Japan had a crisis of food because there was a पूरे के पूरे राइस क्रॉप्स. The staple food is rice, है ना. रिजोटो खाते हैं जापानीज लोग, और वो अपने वो सुशी खाते हैं जिसमें वो सारे बॉइल्ड राइस डालते हैं. आजकल वेरी फेमस अमंग द यंग सुशी. तो वो राइस पे ही स्टेपल जितना रहते हैं, और उनके सारे राइस की क्रॉप में ना डिजीज लग गया था, जिसको फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस बोला था. देयर वाज अ फंगस, हाँ, and that fungus basically led to a increase at a rapid अजीब सा size of the seed. So because of that, the entire crop got destroyed. So that fungus which led to this was Gibberella fujikori, जिसके ऊपर इसको नाम मिला है. That led to the fullest seedling disease of rice. So it is extracted from a fungus. Name of the fungus? Gibberella fujikori. उससे निकाला गया था ये जिब्रेलिक एसिड. And what's the role of gibberellic acid? It basically promotes growth in stems and leaves. हाँ, ये basically nodes पे act करता है. Internode length को increase करता है. Internode length को increase करता है. Can you think of any stem जिसकी अगर internode length increase कर दी तो वो मार्केट में बहुत बिकेगा? Especially अगर वो fruit juice देता है तो. I'm giving you a big hint. Tick tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Any stem which is a fruit which gives a fruit juice. I'm sorry? Sugarcane. Perfect answer. Sugar cane. तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शुगर केन की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में कोई हार्मोन यूज करना हो तो कौन सा हार्मोन यूज करोगे? Gibberellin. Because it is responsible for increasing the stem. It is responsible for increasing the internodal length of stem. Example, Distance between the lines which are on the sugarcane. Yeah, nodes are the lines, the rings on the sugarcane, just like you see them in bamboo also. Even for bamboo. Okay? And just as the name suggests, G for gibberellin, G for germination. It promotes germination. ये seed germination promote करता है, माने seed के embryo की growth promote करता है. In other words, you can say it breaks dormancy. And obviously, अगर ये sugar cane की length increase करेगा, bamboo की length increase करेगा, हर चीज की length increase करेगा, then it is going to increase the yield. So it increases fruit yield. Yeah, it increases the yield of the plant body. I can say yield is the end product. So it increases yield. You can say it increases fruit yield. So can we extend for 10 minutes and finish plant movements also, or we should rest for the day? As you say. You can extend. Sir? I honor your decision, dear kid, but I have to go by what sir says. Deepak sir? I don't know if he's here. Is he here? Shall we extend? How many of you are in the favor? Please hands up. Otherwise, I will be the devil of the day. Aryan, Sashwat, Shaurya, Arush, Raya, Avik. Most of you, majority wins. Huh? So I have 20. If I get 10 hands, I'll go forward. So I can count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Majority wins. Thank you. 14, 13. Cool. So we'll finish with plant movements also. That is going to help us complete our plant control and coordination. All right. See, जैसे हमने बोला कि plant की body में कोई भी चीज उसकी growth से related होती है.
है ना, उसकी डेवलपमेंट जो है उसकी ग्रोथ से रिलेटेड होती है, वैसे ही प्लांट की बॉडी में मूवमेंट्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे कि हमारी बॉडी में मूवमेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर हमें खाना खाना है तो उसके लिए मूव करना पड़ेगा। Until unless I move, I cannot obtain food, है ना, because I'm heterotrophic. Likewise, प्लांट की बॉडी में भी चीजों की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट की खुद की मूवमेंट एंड एज वेल एज प्लांट के अंदर चीजों की मूवमेंट. We have read about in life processes chapter, you would have read about transportation in plant. Transport across xylem, transport across phloem. I hope you know about this conduction through xylem, conduction through phloem. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Likewise, likewise, there are certain movements in plants which are a response, to the factors, external as well as internal. Currently, we're talking about external factors which influence plants, and they show certain movements as a response to stimuli, है ना, कि बाहर से कुछ स्टिमुलस मिला तो उसको उसने रिस्पॉन्ड किया. अब वो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, लाइट भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकता है, ग्रेविटी भी हो सकती है, टच भी हो सकता है. इट कैन बी एनी काइंड ऑफ अ स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस. तो जो प्लांट मूवमेंट्स है, they are basically responses. Movement of plants are nothing but responses to external stimuli. And stimuli can be anything. Light, water, temperature, touch, pressure. Can you think of anything else? Gravity. Anything else which can act as a stimulus? Chemical. These all things can act as a stimulus. And when the plant responds to these stimulus, we say it is showing plant movements. Now, these responses can be of two kinds: with growth or accompanied with growth, without growth. इसमें growth हो भी सकती है, इसमें growth नहीं भी हो सकती. Whenever we have with growth, those movements are called tropic movements. उन movements को हम क्या बोलते हैं? Tropic movements. And whenever we do not have any growth, no growth. I'm sorry. Nastic. Yeah, those movements are known as nastic movements. It's basically like curvature movements. कि सिर्फ टिप ही move कर रही है या एक particular point ही move कर रहा है. Those are known as nastic movements. इसमें growth भी होती है, but इसके अंदर ना basically what is responsible for the movements is there is a change in curvature. In simple words, I can say there is a change in curvature. एक एंगल से दूसरे एंगल पे move कर गया. And this change in curvature is because of a change in turgor pressure. Turgidity समझते हो? पानी का आना तो सेल टर्जिड हो जाएगा, पानी का चला जाना हमारी सेल फ्लैसिड हो जाएगा. Yes. So whenever water enters, it becomes turgid, it becomes extended. Whenever water is lost, it becomes shrink, it droops down. So कभी plant ऐसा है, कभी plant ऐसा है. It is a curvature. इसमें कोई growth नहीं है. So this curvature movement is nastic movement, which is because of gain or loss of water or turgor pressure. Simple words में we can say gain or loss of water. What you read in osmosis in 9th standard, endoosmosis, exoosmosis. Okay, plasmolysis and turgidity. Remember? Yes. So it doesn't have any direction. कि stimulus किस direction से आ रहा है, मैं उस direction में movement use करूँगा. It's just because पानी आया, पानी गया, पानी आया तो खुल गया, पानी चला गया तो बंद हो गया.
It doesn't have any direction. So no particular direction. It's just a change in curvature with no particular direction. Change in their current position. Yeah. ठीक है, तो इसमें हम कुछ ऐसा नहीं कहेंगे कि टुवर्ड्स द लाइट कर्वेचर मूव कर रहा है या अवे फ्रॉम द लाइट कर्वेचर मूव कर रहा है. उसका स्टिमुलस की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है. उसका सिर्फ स्टिमुलस के ऊपर रिस्पॉन्ड है बाय लूजिंग और गेनिंग वाटर, व्हिच हैज ओनली टू प्रोबेबिलिटीज. अब ऐसा नहीं कि साउथ ईस्ट से लाइट आ रही है तो वहां जाएगा, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है तो वहां चला जाएगा, या साउथ वेस्ट से आ रही है तो वहां चला जाएगा. ईदर 1 और 0, बड़ा डिजिटल सा फॉर्मेट है उसका. ओके, no response to direction. It has no relation to the direction of the stimulus. Whereas when I talk of tropic movements, when it is accompanied with growth, it is directional. Okay. And since gain or loss of water is something which can be reversed, so these movements are reversible. Nastic movements are reversible. But growth is something which is irreversible. We just spoke of it. Growth is something which is irreversible. So these movements are directional and irreversible. एक बार ट्रॉपिक मूवमेंट हो गई तो फिर वो उसको रिवर्स नहीं कर सकते बिकॉज वो ग्रोथ की वजह से हुई है. They are irreversible. Is this thing understood? They have a direction. They are irreversible and when I say directional, Bade, it can be towards the stimulus. It can be away from the stimulus. Excuse me, ma'am. Yes, Pita. Ma'am, forcefully तो change कर सकते हैं ना इसको. I'm sorry. Ma'am, forcefully तो उसको reverse कर सकते हैं ना. यार forcefully तो फिर कुछ भी कर सकते हैं. फिर वो natural नहीं हुआ. That's not plant control and coordination. That artificial control and coordination. Then it's artificial intelligence, right? We're talking about natural control and coordination by plants. मैं वो तो हम कहीं स्पेसिफिक एरिया पे लाइट देंगे तो वहाँ पे फोर्सफुली ग्रो हो जाएगा. वो तो फिर वो आपकी इच्छा है कि आप चाहते हो कि आपको पता है आपने यहाँ लाइट दी तो ये यहाँ ग्रो कर जाएगा. That's exploitation of the property of plant. हाँ, कि तुमको पता है कि मुझे ना मनी प्लांट इस जगह पे ग्रो करना है और मनी प्लांट की ना प्रॉपर्टी है कि जहां उसे टच मिलता है वहां वो ग्रो कर जाते हैं. तो मैं काम करता हूँ इसको ना इस वाली वॉल पे टच कराता हूँ ताकि इस वाली वॉल पे ग्रो करे. That's exploitation of the property of growth by touch. So you are wanting it to grow that way. That's why you are putting it. But naturally तो वो वही ग्रो कर रहा है ना जहाँ वो टच कर रहा है. अब हो सकता है तुमने करा तो बट थोड़ा बहुत एंगल गड़बड़ आ जाए तो फिर वो वहां नहीं जाएगा. It's like that. So you can apply the property to achieve a desired result, but the property is inherent only because it has a property to respond to a particular stimuli in a fixed manner. So we want to learn what is that manner so that we can exploit it. हम ये सब इसीलिए तो पढ़ते हैं कि हमारे क्या काम आ सकता है हम वो यूज करेंगे. बहुत लालची टाइप के लोग हैं. Got it? Yes. Yes, ma'am. So whenever we have a direction, it can be towards the direction or away from the direction of stimuli. जब भी towards होता है तो उसको बोलते हैं positive. हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ होता है तो ये तो बहुत negative है. ठीक है? So whenever the movement is towards the stimulus, it's a positive movement. Whenever it is away from the stimulus, it's a negative movement. Shall we look at the type of tropic and nastic movements? Yes, ma'am. Final and last shot for the day. Types of movements on the basis of type of stimulus. So I'm giving it a slash heading. कि जैसा stimulus वैसी movement. Tropic की भी, nastic की भी. हाँ? And best possible if we can have an example for each. So that कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर सकें. Tropic movement, nastic movement. Let's name them and then write their examples. I would appreciate if you can speak with me. If the stimulus is light,
The tropic movement would be known as Phototropism. phototropic movement, bending towards the light. Phototropic, अगर towards the light हो रहा है तो positive है, away from the light हो रहा है तो negative है, ठीक है? If it is gravity, Geotropic. geotropic movement can be positive, can be negative. Can you give an example of any plant part which shows positive geotropic movement? Roots. Bingo. Next, if it is touch, thigmotropic. Touch is thigmotropic. जितने भी आपके क्लाइंबर्स हैं, जैसे मनी प्लांट की हमने बात करी, ट्रेलर्स है, ठीक है, टेंड्रिल है, ये सब कैसे ग्रो करते हैं? बाय टच. स्पेशली मनी प्लांट, जहां पे वो टच करेगा वहीं पे ग्रो करेगा, जहां पे डंडी एक्सटेंड कर दोगे वहीं पे ही करेगा. हम बेसिकली जहां सपोर्ट मिल रहा है, जहां उसको सपोर्ट मिल रहा है, राइट. अगर केमिकल होगा तो कीमोट्रोपिक. Can you give me an example of a chemotropic movement? पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है ना, वो ओवरी, जो प्लांट की ओवरी होती है, वो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करती है कि हमें मेल गैमीट्स दो. That's a chemotropic movement. पोलन ट्यूब जर्मिनेशन बोलते हैं उसको. Growth of pollen tube towards ovary is a chemotropic movement, right? Likewise, water. If water is the stimulus, then what is going to be? Hydrotropic movement. Again, can you tell me a plant part which shows hydrotropic positive movement? Root. Roots. Again, towards the water move करते हैं. ठीक. Temperature. Thermotropic movement. Can you give me a plant part which may show response to change in temperature day and night? Leaves. Very good. Open and close. Is tropic or nastic? Nastic movement. कोई growth नहीं है. तो जो दिन के टाइम में ग्रोथ हो, हाई टेम्परेचर में ग्रोथ हो, हाँ, दैट इज थर्मोट्रॉपिक पॉजिटिव. जो लो टेम्परेचर में ग्रोथ हो या जो कम टेम्परेचर में रुक जाए, ग्रो ना करे, दैट इज नेगेटिव थर्मोट्रॉपिक. सो हायर टेम्परेचर्स प्रमोट सेल डिविजन, प्रमोट फोटोसिंथेसिस. तो थर्मोट्रॉपिक इज फोटोसिंथेटिक ग्रोथ कह सकते हो. तो लीव्स इज द करेक्ट आंसर. बात समझ में आई? फोटोसिंथेसिस होगा, लीफ में खाना बनेगा, लीफ की ग्रोथ होगी. दैट फोटोसिंथेटिक ग्रोथ इज अ थर्मोट्रॉपिक response of the plant body. Likewise, if I only talk of sun, you know what is the word used for sun god? Greek god. तुम्हारी वही सारी Star Wars वाली मूवी वाला. Helios. Very good. Heliotropism. After all, biology is all Greek. ठीक है, towards the sun, away from the sun. Here you can say sunflower. अब आप कह सकते हो कि हाँ, जो उसकी स्टेम की ग्रोथ होती है वो टुवर्ड्स द सन होती है, नॉट लाइट. दैट्स व्हाई वी कॉल इट सनफ्लावर. ठीक है? सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोलर ट्रैकिंग. दे ग्रो टुवर्ड्स द सन, नॉट लाइट, and their stem grows towards the sun, not flower. Okay? Excuse me. Yes. And when the roots they grow towards some chemicals or some nutrients in the soil, can we call it chemotropic movement? Not really. It's the water primary which has nutrients and minerals. तो पहले water है, उसके बाद उसके अंदर dissolved water के अंदर nutrients and minerals है. So what comes first is the primary stimulus. Okay. Yeah. Likewise, let's talk about nastic movements. Excuse me, ma'am. Yeah. You need like positive and negative movements in all of the subtypes of tropic movement. If we know it's best, है ना? अगर मुझे पता है रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है तो उसके ऑपोजिट स्टेम क्या होगा? नेगेटिव.
ऐसे वाले जो है हम निकाल सकते हैं. Similarly, let's look at nasty. Photonasty माने लाइट के रिस्पॉन्स में कर्वेचर बदलना, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है. प्रेजेंस ऑफ लाइट माने लाइट में ओपन कर जाएगा और नाइट में जैसे डार्क में क्लोज कर जाएगा. जैसे फ्लावर्स होते हैं, दिन में खिल जाते हैं, रात को बंद हो जाते हैं. ठीक है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर डे एंड नाइट में, that is which type of movement? Photonasty. Okay, day open, night close, be it flowers or leaves. It's which kind of a movement? Photonasty. Yeah. मैम एक बार थिग्मोट्रोपिक बता दो, समझ नहीं आया. Thigmotropism is touch data. Have you ever seen people doing a kind of play with the plants in their balcony? कि वो एक लड़ी सी होती है, वो फैलती चली जाती है पूरी दीवार के ऊपर. जैसे जैसे वो दीवार को टच करती है, वैसे वैसे पूरी दीवार को कवर कर लेती है. Have you seen such plants growing? मैम और वो ग्राउंड पे भी ग्रो हो जाते हैं, अगर उनको ग्राउंड में फैला देते हैं. like Exactly. Exactly. So that is what is thigmotropic movement. Touch जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ growth होगी, वहाँ वहाँ वो फैल जाएगा. There is also something which is called thigmonasty. माने touch पे open close. हाँ, that touch पे open close is shown by touch me not now. Mimosa. now there is a slight difference in it. Thigmo में touch पे ना pressure आता है. And उस pressure के लिए हम एक word use करते हैं, more better term, we call it seismonasty. तो कई बार उसको thigmonasty भी बोला जाता है, कई बार उसको seismonasty भी बोला जाता है. कि touch has a pressure, and in terms of pressure, there is an opening and closing, or there is a change in turgor pressure. This pressure brings about a change in turgor pressure. And this change in turgor pressure leads to opening and closing of leaf of touch me not plant. That is Mimosa pudica. Open, close leaves. Yes. Yes, please. Venus flytrap. Venus flytrap is an example of thigmonasty, I can say. Typical example of thigmonasty. कि जैसे ही इंसेक्ट ने टच किया, फ्लैप क्लोज. हाँ, एकदम से चेंज आया टर्गर प्रेशर में और उसने बंद कर लिया कि अब तो मैं इसको खाऊंगा. Yes, I'll buy that. Okay. Likewise, a certain temperature. Have you ever seen tulips in India? Do we see them in Delhi? किसी को मन करे मुझे तो ट्यूलिप ही पसंद है. हाँ, और मुझे तो यही गिफ्ट करने अपने फ्रेंड को. Would you find them here? No. We have a tropical climate. So this temperature, low temperature, high temperature, they actually promote growth of certain plants and they retard the growth of certain plants. And likewise, they promote the movement and they retard the movement. One such is shown by tulip. Whenever they get an increase in temperature, they bloom. हाँ, जैसे दिन में वो खिल जाते हैं, वही वाली बात. रात में वो बंद हो जाते हैं. So with day and night, there is a component of temperature also. So temperature वाला thermonasty also has a day and night component. Open in day, close in night. Open, close, day, night. Classic example, tulip. Here is where we end the plant control and coordination. Any doubts, anybody? Plant movements, plant hormones. Ma'am, this topic only, ma'am, are like nasty and thermonasty same, right? Is thigmonasty, thermonasty same? Not really. Neither is photonasty, thermonasty same. It's a kind of combination of both. Okay, let me tell you. आपने digestion में protein digesting enzymes पढ़े होंगे. Pepsin is also a protein digesting enzyme, but it comes from stomach.
Huh? Likewise, trypsin and chymotrypsin are also protein digesting enzyme, but comes from intestine. Yes. Am I right? And you would have also read about carboxypeptidases and aminopeptidases. They also act on protein, but smaller part of protein, peptides पर. वैसे ही बेटा ये जो thermonasty और photonasty है, day and night, high temperature, low temperature, there are a part of one bigger group, which is known as nictinasty. और हम बोल देते हैं कि nictinastic movements होती हैं, जिसपे temperature और light का effect होता है. So together, let's do it this way. Let's put them up and down so that you have no confusion. Or you can club 1 and 3. Not that my lasso select is working. Let's highlight. Photonasty and thermonasty together, huh, are included in one broader movement, nictinasty. Now is that okay? Yes. Anything else? Ma'am, chemotropic, what is? जब केमिकल्स की वजह से ग्रोथ हो, कोई केमिकल किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को ग्रो करने पे मजबूर करे कि आप ग्रो करो और चलो, दैट इज कीमोट्रोपिक मूवमेंट. जैसे कि ओवरी के कुछ केमिकल्स जो आपके स्टिग्मा के ऊपर बैठे हुए पोलन को बोलते कि नहीं तो ग्रो ही कर अभी, लाइक दिस. सी I can draw it and show it to you that this is a stigma, this is style, this is ovary. Okay, and ovary में we have ovule. Ovule has the egg cell. Now egg cell is waiting to get fertilized. Pollen is sitting on the stigma. Pollination होती है, pollen stigma पे बैठा है. अब pollen के पास male gamete है और egg को चाहिए. तो यहाँ से कुछ chemical secrete होता है जो force करता है कि pollen आप pollen tube बनाओ और male gametes को यहाँ पे transport करो. So this germination and movement of pollen tube towards the ovary is a chemotropic movement. Okay, ma'am. Anything else, anybody? No, ma'am. मैम सनफ्लावर नास्टिक मूवमेंट का एग्जांपल क्यों नहीं होता? Because उसमें उसकी stem grow कर जाती है. आपने देखा है बहुत बूढ़ा वाला जो sunflower होता है वो बिल्कुल ऐसे droop कर जाता है नीचे. When you have a long period of growth, the sunflower it droops down because the stem Yes, shows ma'am. growth. Forms an U shape. Yeah, it forms a U shape because of the growth of the stem, not the flower. Okay, उसका flower move नहीं कर रहा, उसकी stem move कर रही है. We have to understand this. The opening and closing of flower वो तो light वाला movement है. But the growth of the stem towards the light जो है, वो towards the light भी नहीं है, वो towards the sun है. तभी हम उसको heliotropic movement बोलते हैं, phototropic movement. Okay? Yes, जो flower light में open हो जाता है और like dark में close होता है, वो तो photonasty में आएगा. बिल्कुल. Flower का open close is photonasty. Stem की growth is tropic. Okay, ma'am. Anything else I can help with you? Help you with, sorry. Chale, let's. Perfecto. We can halt it for the day. Thank you, guys. Good night. We'll see you in the next Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye-bye. Thank you. Bye.